guiding, guiding force behind us. Sir, Dr. Prasad. Now, I request our esteemed guest, the chief speaker of this webinar, Mr. Subroto Bagchi, and the update knowledge, Subroto Bagchi, Chairman of Odisha Skill Development Authority, Government of Odisha, and the chief spokesperson, Government of Odisha, to fight against COVID-19 pandemic. Mr. Subroto Bagchi ji. Namaskar, sir. Now, I request Honorable Principal Dr. Bijay Kumar Barik to deliver his welcome address. Over to Dr. Barik. Thank you. Good morning and welcome you all. Esteemed convener of this webinar, Dr. Namita Patnaik, lecturer in economics, MCNL, and Assistant State Commissioner Girls, Odisha State, Bharat Scouts and Guides. Distinguished guest, Honorable Dr. Prasad Mishra, National Vice President and State Commissioner, Odisha State, Bharat Scouts and Guides. Honorable Dr. Subroto Bagchi, Chairman of Odisha Skill Development Authority, Chief Spokesperson in fight against COVID-19, Government of Odisha, and the Chief Guest and the Chief Speaker of today's webinar, esteemed Dr. A.P. Samal, Vice Principal of MCNL, Dr. Rajkishwar Mishra, the Chief Coordinator, and Mr. Gyanaranjan Panigrahi, the Chief Admin of this webinar, other dignitaries and the participants. At the outset, I would like to thank Dr. Namita Patnaik, who has taken initiative to organize this webinar from Rangers and Rovers Unit of Maharishi College of Natural Law. And in this webinar, about 600 participants they have logged in, and also this is an international webinar in which the participants from 6 other countries have participated. I am also thankful and grateful to Dr. Prasad Mishra, who has agreed to inaugurate this webinar and deliver his inaugural address. About Sir, I would like to add that under his vibrant and efficient leadership, scientists, scouts and guides have gained unexpected momentum not only in Odisha but also in India by rendering service to the needy and the distressed. I am extremely happy to have Dr. Mishra in this webinar. I, on behalf of all my staff members and the students, welcome you, sir. I am also very grateful to our chief guest and the chief speaker, Mr. Bagchi, sir, who in spite of his busy schedule and valuable engagement has given his kind consent to deliver on today's burning topic, that is social responsibilities and the role of public and NGOs in COVID-19 pandemic. On behalf of all our staff members and the students, I also welcome you, sir. I would like to say that you have created remarkable employable skills to mostly dropouts of the state. As a result, the skilled youths have started their small business instead of job seekers. I also express my sincere gratitude to Sir as he is today in our midst in this seminar. Nothing more to add. Once again, I, on behalf of all my staff members and the students, welcome to our distinguished guests, other esteemed dignitaries, and the participants. Here I conclude my welcome speech. Thanks to all. Now, I would like to request Dr. Namita Patnaik, the convener of this webinar, to introduce the guest.
और कटिगला कि शुभुनी ना कौन हेलो राजू बाबू राजू बाबू सर सर आपण म्यूट करंतु बर्तन सेशन चलची नहीं नहीं ये कटिगला कहीं नहीं नहीं किसी कठिन नहीं सर सम कनेक्टिविटी इश्यू प्लीज वेट सर राजू बाबू सर सर अरे मोर सुबिला ना नहीं किछि yes yes sir sir it is in the meeting very much in the meeting sir you please mute everything is in right direction Dr. Bijay Kumar Barik, thank you, sir. Now, I'll continue with the guest introduction, sir. As you know all, they are international figure of our state. Just have a look of their biodata. Just in a meanwhile, I'll put in the screen. First of all, I'll request to put up Mr. Dr. Kali Prasad Mishra. The biodata of Dr. Kali Prasad Mishra. Dr. Kali Prasad Mishra, he is the National Vice President of Bharat Scouts and Guide India. Formerly, he was also the Headquarter Commissioner of Bharat Scouts and Guide New Delhi, and now he is continuing as the Chief Commissioner of Odisha State Bharat Scouts and Guide. We are glad to get such a wonderful personality with us. He is the real guiding force behind me. And to the best of our knowledge, he is just like the guru of all the Bharat Scouts and Guide members still in Odisha and in other states also. He is with some professional qualification, we say he is the member, and all these are honorary posts like the Additional Commissioner of Senior Ambulance. He is the Director General of Kalinga Sanskriti, Director of Indian Society, and Chairman of Sishu Vikas, President Freedom Fighter Success Organization, like on. He is also life member of many organizations like St. John Ambulance, Indian Red Cross Society, all that. To the best of my knowledge, I just introduce one point for the organization of 13th National Jamboree and 3rd SAC Jamboree in Odisha. He was awarded with the recipient that Silver Elephant Award, which is the highest award of Bharat Scouts and Guide from the then President of India. It's really very amazing for all of us, and I welcome sir. Now I want to introduce, it's my privilege to introduce our guest of this morning, Mr. Subroto Bagchi. Please, his biodata. With his pragmatic entrepreneurship, innovative ideas, and commanding leadership, he was appointed as the chief spokesperson of Odisha government in the fight against COVID-19 pandemic. The brain and the mastermind behind the Odisha initiative too, Mr. Subroto Bagchi, a man from Pattanaik, Odisha, invited by Sri Naveen Patnaik ji, the Chief Minister of Odisha in 2016, to set up the Odisha Skill Development Authority, and he was appointed as the chairperson. Congratulations to you, sir. Prior to this assignment, he spent 4 decades with the Indian IT industry. He is best known for the co-founder of Mindtree, one of the most pioneering and recognized software companies that built the Aadhaar platform in 2019. As the son of the soil, he contributed many books to the literature. He was the author of many books based on his personal experience, which become bestsellers. Out of them, this is displayed in the board. You can see high performance coke is the world, the professional MBA at 16, elephant catchers, Cell. His book Cell received the CK Prahlad Award for the best business book in 2019.
To the best of my knowledge, many of his books have been translated in all major Indian languages, including Chinese and Korean. And his contribution to the society is that to inform you, all of you that Mr. Bagchi, the well-known eminent writer, the chairperson of most school government of Odisha, and Mr. Bagchi have placed their personal resources and the time to support the cause of prevention of blindness, geriatric care, and mental health care and school education for the deprived people of the society. I am really happy to get such personality. I salute to to his commitment, his sincerity, his dedication, and commanding leadership. Thank you, sir. Now we'll have Scout prayer. This is dedicated to the warriors of COVID-19, like our doctors, the living gods, the nurses, the police personnel, the media friends, the district administration, the state administration, the social activists, and many more. Now, start prayer. Please be in silence. दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना हमारे ध्यान में आओ प्रभु आंखों में बस जाओ अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना हमारा कर्म हो सेवा हमारा धर्म हो सेवा सदा ही महान हो सेवा तो सेवक चल बना देना वतन के वास्ते जीना वतन के वास्ते मरना वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना I'm happy. I'm happy to inform you all that Lady Vice President of Bharat Guide, Mrs. Kempi Pekam from Arunachal Pradesh. She is with us. Madhusudan Avala, Deputy International Commissioner BSG. She is with us. Mr. Krishna Swamy, the Executive Director BSG India National Headquarters. He is with us. Mr. Khalid, the member of Asia Pacific Region, World Organization of Scout Movement, he is with us. Mrs. Sangeeta Naik, Mrs. Sujata Bahidar, Mr. Prafulla Naik, Mr. Gyanaranjan Bahidar, Dr. Nivedita Das Mahanti, Dr. Ajay Mahanti, all are from USA. Welcome, sir and madam. And now we have the inauguration. The inauguration will be done by our National Vice President, Senior Most Vice President, Dr. Kali Prasad Mishra. Am I audible? Yes, sir. Just a minute, sir. We are having the professional and volunteers of BSG India, Mr. Siddharth Patnaik, the Vice President, Yes Bank, Mr. Kumar, South Chairman, QIST, retired bank officers, IT professionals from Bangalore, Pune, and Mumbai, Mr. Hussain Samani, the Chairperson of All India National Youth Award Foundation, Dr. Saurabh Patnaik, Secretary to Indian Ambulance Odisha, Dr. Major Kalpana Das, Treasurer Indian Network Society, and 40 more organizations with us. So congratulations to all of you, and I'm really grateful to all of you, and welcome to you to this Google board. Now, the inaugural speech by Dr. Kali Prasad Mishra, our sir. Namaskar, respected Sri Subroto Bagchi ji, Chairman Odisha Skill Development Authority, all national, international leaders of Bharat Scouts and Guides,
State Chief Commissioners of Bharat Scouts and Guides, all participants of webinar, Sri Bijay Kumar Barik, Principal Maharishi College, Convener Dr. Namita Patnaik, Dr. Rajkishore Mishra, and top leaders of other non-governmental agencies. I have got many telephone calls that those in India who wanted to admit in this program because of our space is less, they could not join. Friends, there has been a change in official messaging which has deflated the fearsome reputation of COVID-19. Today, almost 4 months later, India heading towards unlock. The Odisha government has always taken right steps to prevent the Mahamari, and that has been followed by other states and national also. Now, when corona victim cases are skyrocketing, the government of Odisha has declared full lockdown for another 15 days. In this juncture, we should understand our social responsibility. Reluctance among people and not understanding how dangerous it is, perhaps we are helping unknowingly to spread the virus. In my opinion, the first responsibility of every citizen is to follow the instruction of the government. Sorry to interrupt you, we are not able to see the speaker. Use mask, We are sanitize, not able to see the speaker. wash hands, and maintain social distance. Sir, And We are not able to see the speaker. Please focus the camera on the speaker. help people to maintain social distance with mask and wash hands frequently. Rover leaders, Ranger leaders, Rover Scouts, Ranger Scouts, and teachers have done wonderful service in these days. pin the speaking ID on presentation. Early in March, first week, before the announcement of lockdown, the Odisha State Bharat Scout Guides started a COVID Warriors Brigade. Participants from all districts after this training went back to their own area and formed warriors in every village, every panchayat. Individual Rover Rangers and teachers and also scout gangs started preparing masks. The National Training Center, State Training Center at Vargaon, Sundargarh, is the best among them. They prepared and distributed more than 6 lakhs masks for distribution, supplied to all districts and to the mask bank at state headquarters. Odisha State Bharat Scout and Guides by this time have distributed more than 12 lakhs masks, distributed sanitizer, hand wash, soap to public and food packets to needy people, helped in medical and police people. Now also their service is continuing. I thank all my COVID warriors, adult leaders, Rover Rangers and teachers for that. Such a webinar is an wonderful attempt by Dr. Namita Pattanaik to ally the society. We have got Mr. Subroto Bagchi, spokesperson of the government for COVID-19, as chief speaker, who will enlighten us the situation and our future role. With these words, I inaugurate the webinar. Thank you all. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Now, please watch and observe the warriors of Odisha State Bharat Scouts and Guides
in action in photo just for 2 minutes. Followed by follow this with the pic. Um, we are having the principals, lectures of different colleges, universities, Center for Youth and Social Development, IST, ACDC, CLAR, NYP, RHA, We for You, JSS, Daria, University, Soch, Kadam, EFT, the Local Story, Abhigyan, State Citizen Forum, Janakalyan Club, Tiger Trust, Salam Jivan, Lions Club Puri, Rotary Club Ekavra Ketra, and St. John Ambulance, NYK, NSS, and Youth Record. Many more, and about 800 participants with us. Now, you might be very anxiously, eagerly, and very excited to know, to listen from our guest of this morning, only within 10 seconds maybe. Our chief guest, chief speaker of this webinar, Mr. Subrat Bachi will be, yes. Now, sir, may I request to, over to Mr. Bagchi, please. Yes. Sir, kindly deliver your presentation, sir. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ବାରିକ, ଡକ୍ଟର ନମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡକ୍ଟର ସାମଲ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଡକ୍ଟର କାଳି ମିଶ୍ର ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ କହିଲେ। Dr. Pattanaik, Dr. Namita Pattanaik, are you getting an echo from me? Can No, you sir, hear me? it's okay. Yes, sir. Everybody can hear me clearly? Yes, sir. आपण माने बहुत पुराना संस्था 100 मोर जानिबारे 100 वर्ष ऊपर हुए तो 113 वर्ष रो संस्था आपण माने समाज पई देश पई जातीय स्तर रे राज्य स्तर रे अंतर्जातिक स्तर रे आपण माने जो परि भाव रे निस्वार्थ पर सेवा करि चली चंती सेथि पई राज्य एवं जाति तरफ मु आपण मान को कृतज्ञता ज्ञापन आज आपण माने मते आपण को परिवार रे शामिल करचंती आपण माने मते आपण मान को मोर संदेश रखिबार सुयोग दैचंती एथि पई मो तरफ रु एवं माननीय मुख्यमंत्री को तरफ रु आपण मान को धन्यवाद जणाउछि। आमे आजिर विशेष चर्चा करिवा आगु प्रथमे परिसंख्यान उपरे टिके नजर दबा। आपण माने भी देखुथिबे निश्चय जे गतकाली सुधा सारा पृथ्वी रे 1,40,40,00,000 रु ऊर्ध्व लोक कोरोना रे संक्रमित होइचंती एवं 5% रो मृत्यु हार रहउची पाखा पाखी। आम भारत वर्ष रे वर्तमान सुधा सरकारी आकलन अनुसार 11 लाख पाखा पाखी लोक संक्रमित होइचंती एवं 26,000 पाखा पाखी 26,800 रु ऊर्ध्व आज सकाळ सुधा मृत्युवरण कले। आपण मान को पृथ्वी एवं
देश कथा कहबार गोटे उद्देश्य अछि सेटा हला हम ओडिसा कोठी अछि सेटा हमकु सबले जानिया पई हम उत्सुकता रहउछि पृथ्वी तुलन रे देश तुलन रे हम जदि राज्य ऊपर नजर रखिबा ताहले पर्यंत हमर 16701 जन संक्रमित होइचंती 16700 धरंतु किंतु बढ़ी चली तेरे सुखर कथा जे दुईटी जिनिस ओडिसा रे पर्यंत आमे अख्तियार रखि परिचे सेटा हला 16700 जनक मध्यरु मात्र 1/3 एक्टिव अछंती तो दुई जो बृहत्तर चित्र ता उपरे नजर रखिया पड़िबो इंग्रजी रे जो हम बिग पिक्चर बोली कहउचे बृहत्तर जो छविटी अछि ता उपरे विभिन्न लोक विभिन्न रकम मत रखुछंती किंतु गोटे जिनस जे कोविड-19 विषय संपूर्ण भाव में चिकित्सक मान पाखे वैज्ञानिक मान पाखे कहारी पाखे सविशेष धारणा नहीं प्रतिदिन नुआ नुआ तथ्य बाहर प्रतिदिन नुआ नुआ जिनस जानुचे आपण माने भी इंटरनेट रे देखुथिबे खबर कागज रे पढुथिबे व्हाट्सएप वीडियो माध्यम रे जानुथिबे विभिन्न जिनस मु मध्य विभिन्न विशेषज्ञ संगे संपर्क रखिछि सेमान संग कथबार्ता होछि तांको सिखुछि जानुछि विषयटा ऊपर एक्सप्लेनेशन रहिछि डॉक्टर नमिता अपन टिके समस्त म्यूट करिया को कहिबे की This one, please mute. Yeah. Sorry, sir. दीटा जिनस गोटे म्यूट करंतु आ दी पहुंचन दिस गोटे डिस्ट्रैक्शन रोची तेणु जदि चैट टाक भी मध्ये बंद रखिबे ताले टिके भलो हो Dear participants, apart from the resource person, kindly mute your mic and disable your videos so there will be no disturbance for others. Thank you. डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट होचंती सारा विश्वर हाथ गणंता महामारी विशेषज्ञ मान को भितर जणे is one of the fewest epidemic experts in the whole world. Now I want to tell you about his background a little bit before I continue with the rest of my conversation. Dr. Larry Brilliant गोटे सेकेंड आपण माने टिके वेट करो Yes. Then sir will just come back within 1 minute. I just want to tell you, friends, it's a really very amazing program, and throughout the world, everyone is watching through YouTube. So please subscribe and make your sound mute so that everybody could see. And I'm really grateful, sir. Sir is coming back. Yes, sir. Sir, your mic is mute, sir. Bagchi, sir. डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट होचंती हाथ गणंता एपिडेमिक एक्सपर्ट मान को भितर जणे तबे एपिडेमिक्स कहले विभिन्न रकम एपिडेमिक्स रहिछि स्मॉल पॉक्स ऊपरे सारा पृथ्वी रे जण अथॉरिटी अछंती तांको भितर से जणे एवं स्मॉल पॉक्स रो दूरीकरण पछरे तांकर गोटे विशेष अवदान रहितला एवं आपण माने जानिथिबे जे भारत विशेष भाव में आक्रांत होता स्मॉल पॉक्स को नहीं की आउ ये जो बसंत रोग
स्मॉल पॉक्स को भारत वर्ष नेपाल एई उपमहादेश अंचल विताड़ित करिबारे तांकर विशेष अवदान रहितला एवं बहु वर्ष भारत रे थिले सीए कहउचंती जे एई जो कोविड-19 भूताणु बा भाइरस एटा को गोटे आउ गोटे इन्फ्लुएंजा फ्लू भलिया हमको जदि हमें ट्रीट करिवा ताले विल बी इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन तांकर कहया कथा डोंट ट्रीट इट लाइक एनी अदर फ्लू गोटे एटा भी गोटे फ्लू तार कारण हला तांकर कहबा अनुसार दिस इज ए नोज टू टोज डिजीज आमे नुआ नुआ भाबिथिले जे आमे केवल नाक बाटे से भूताणु पसुची एवं हमर श्वास प्रक्रिया को बाधा जोगोची जार फलरे हमर विभिन्न रकमर भयानक परिस्थिति सृष्टि करूची किंतु वर्तमान हमर जानिबा कथा जे ए जो भाइरस कोविड-19 सेटा नाकोठु नै करी पाद अंगुठी पर्यंत जे कोनसी अंग को अफेक्ट करि पारिबो एवं करूची मध्य सो इट्स अ नोज टू टोज डिजीज एथिरे किडनी फेलियर होची एथिरे फ्रॉस्ट बाइट परी गोडर जो एक्सट्रीमिटीज गुडा रहउची तारी इफेक्ट होची केते जनंकर एथिरे लोकंकर स्ट्रोक हे परिबो एथिरे ब्रेन भी अफेक्टेड होची तेनो ए जो महामारी एटा जे कोनसी अंग को अचल करी तार क्षमता रहउची सो वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली तापरे डॉक्टर लैरी ब्रिलियंटंकर कहबा कथा जे ए जो जिंस ताकू प्रतिरोध करिबा पई ए पर्यंत आपण माने जानि छथि वैक्सीन तैयारी हे नै किंतु समस्त उणाधिके पढुचथि खबर काज रे इंटरनेट रे के कोची 6 मास रे बाहर जिवो के कोची वर्ष करे बाहर जिवो के कोची जे भारत रे आरंभ होलानी के कोची ऑक्सफोर्ड रे सफल होलानी किंतु अधिकांश जिंस और अनइनफॉर्म्ड स्टेटमेंट्स वैक्सीन विषय रे केतेटा जिंस हमको मन रखे पड़िबो तारो तीनटा स्टेज रहिछि गोटे हला डिस्कवरी सठिक वैक्सीन टाकू सठिक टीका टाकू आगो आविष्कार करियको पड़िबो आविष्कार करिबा परे तारो टेस्ट करियको पड़िबो और जो टेस्ट हुए वैक्सीन रो विभिन्न स्तर रे हुए पशु मान को टेस्ट करिया परे मनुष्य टेस्ट करिया पड़िबो विभिन्न देश रे टेस्ट करिया पड़िबो विभिन्न बयस वर्ग रे टेस्ट करिया पड़िबो तो एटा छोटो पिला खेल भलिया जिंस नो जे आज बाहर कर देली काली आपन को वैक्सीनेशन कर देली तापरे जोटा आहुरी बड़ कथा सेटा हला जते बेले वैक्सीनेशन प्रोग्राम टा को डिप्लॉय करा हुए आपण माने संस्था चलाती तो आपण माने भलो बुझी परिबे जेतबे स्मॉल पॉक्स डिप्लॉयमेंट हेतला वैक्सीन सेतबेले 3 वर्ष रु ऊर्ध्व लागितला ताकू संपूर्ण भाव रे डिप्लॉय करिया पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जेतबे आरंभ होइतला सेतबेले 10 वर्ष ठु मध्य ऊर्ध्व लागितला समय ताकू डिप्लॉय करिया पे समस्तनको पाखु पहुंचेला ए जिंसटी कहिबा पछरे गोटिए बड़ उद्देश्य रहिछि और सेटा हला अनेक शिक्षित लोक से माने हर्ड इम्यूनिटी कथा कहउछन जे बहुत आकार एटा बढ़ी गले बेसी लोक आक्रांत हेले ऑटोमेटिकली हर्ड इम्यूनिटी आसी जिवो डॉक्टर लैरी ब्रिलियंटंकर कहबा कथा जे हर्ड इम्यूनिटी जिंसटा केवल संक्रमण रु हुए नाही इट इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ केते जण इम्यूनाइज्ड हेले केते जनकर वैक्सीनेशन दियाला तो वैक्सीनेशन हबा दरकार ता संग को संक्रमण हबा दरकार ता परे जायकरी आपनकर हर्ड इम्यूनिटी आसीबो 60% रु ऊर्ध्व किंतु
मास्क आपण केते जन पिंधिबे और केते समय पिंधिबे ता उपरे निजर एवं सामाजिक सुरक्षा विशेष भाव में निर्भर करुछि। तांकर कहवा कथा जे सेही दिन ही आमे सुरक्षित होई परिबा जो दिन 95% बा 95% लोक 95% ऑफ द टाइम मास्क पिंधिबे। आमे कोन होउछे जेतबेले टू व्हीलर ने कि घरु बाहरुछे सेतबेले एपटे अनेले सेपटे अनेले टिकेनाकू मास्क पिंधिले चली गले। दैट इज नॉट वेयरिंग अ मास्क, दैट इज नॉट द प्रोटेक्शन। The true protection will come when 95% of the people wear a mask 95% of the time. तामाने आपण सोइबा घर व्यतीत सोइबा व्यतीत अन्य समय निज घरे मध्ये आपण मास्क पिंधिବାକୁ पड़े, मास्क को सफा करिବାକୁ पड़े, मास्क को धोइବାକୁ पड़े। डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट केवल भारत उपमहादेश रे जने एपिडेमिक एक्सपर्ट हिसाब रे काम करि नांती, सीए पुरी रे 6 मास थिले। से दीक्षा नै थिले जने भारतीय गुरु को थारो एवं दीक्षा नवा पर से पुरी रे रहिले 6 मास। तेनु सीए भारत सहित संश्लिष्ट नहंते, पुरी ओडिसा सहित संश्लिष्ट जानि छंती प्रैक्टिकल रियलिटीज कोन एवं तांकर कहवा कथा जे 95-95 फॉर्मूला भारत वर्ष रे करिवा बहुत मुश्किल, किंतु यदि आमे अंतत पक्षे 85% व्यक्ति 85% समय मास्क व्यवहार न करिवे ताहले ए महामारी को आमे कंट्रोल को आनी परिबा ना। ए जो गोटी जिंस एटा आपण मान जो मास्क बांटु छंती एटा केते बड़ काम करि छंती आपण मध्ये आकलन करि परिबे ना, किंतु मास्क बांटी दले हो नै निजे आग जने एग्जांपल है कि आबा को पड़िबो, दृष्टांत होबा को पड़िबो एवं अन्य मान को आपण को परिसर भीतर को आनियो को पड़िबो। ए संस्पर्श रे मु आपण को आउ गोटी कथा तांकर कहिबी तापर अन्य कथा हबा। आपण माने जानंती जे बयस जते बढ़ी बढ़ी जीव ता सेही अनुपात रे सेही अनुपात रे आपनकर रिस्क फैक्टर बढ़ी बढ़ी जीव। 50 वर्ष रु 60 वर्ष लोकंकर जतिक रिस्क 60 रे 70 वर्ष लोकंकर रिस्क बहुगुण रे अधिक एवं 70 वर्ष रो अधिक जो माने तांकर आहुरी बहुगुण रे अधिक। किंतु जदि जने 50 वर्ष वयस्क व्यक्ति तांकर आउ गोटिए बयस जनित रोग अछि, परंतु रक्तचाप अछि बा मधुमेह अछि, डायबिटीज अछि बा आपनकर ब्लड प्रेशर अछि, गोटिए रोग अछि। 50 वर्ष बयस गोटिए बयस जनित रोग इक्वल टू 60 वर्ष बयस रो रिस्क। परंतु 50 वर्ष रे जनकर कोविड हला तार रिस्क फैक्टर इज x, जदि 60s रे कोविड हला द रिस्क फैक्टर बिकम्स 10x, 10 गुण अधिक होई पारे, 5 गुण अधिक होई पारे। तेणु 50 वर्ष बयस रे मोर जदि गोटिए कोमॉर्बिडिटी बा गोटिए रोग रहिला तमने मो ऑटोमेटिकली 60 वर्ष बयस रो रिस्क फैक्टर को चली गय। जदि 50 वर्ष 55 वर्ष वयस्क व्यक्ति केवल गोटिए न आउ गोटिए रोग रो मध्य शिकार होइछंती बयस जनित रोग, ताले आपनकर रिस्क फैक्टर इज इक्वल टू जो जहार 70 वर्ष बयस तार रिस्क फैक्टर संगे आपन संभाली छ। तार अर्थ कोन? अर्थ हला जे हमकु बहुत सेंसिटिव होबा को पड़िबो, संवेदनशील होबा को पड़िबो, काहेकि ना समस्तन को घरे 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष रु ऊर्ध्व व्यक्ति रही छंती। निजको सचेतन होबा को पड़िबो एवं এই जो रोग तार जो भयंकर प्रभाव पड़ी पारे, बयस जनित प्रभाव पड़ी पारे, से विषय रे हमको सचेतन होबा को पड़े। आपण माने जेहेतु समाज चेतना को नेकरी काम करूछंती, आपण माने जेहेतु केवल राज्य रे नो देश रे नो अंतर्जातिक स्तर रे आपण जने समाज पे गोटे लाइट हाउस संस्था बोली मु कहबी। आपण दीप देखुछंती, इन्वॉल्व होइछंती, काम करूछंती। आपण मानकर सदस्य मानक पई मु केतोटी कथा कहबा को चाहिबी। आपण कोन करि परिबे, व्यक्तिगत हिसाब रे कोन करि परिबे एवं गोष्ठीगत हिसाब रे आपण माने कोन करिबे।
प्रथम जिनस मु आपण मान को कहबी टिके मन दे सुनिबे सेटा हला निजे सुरक्षित रहिबे आपण जदि सुरक्षित रहिबे सेटा ही प्रथम कर्तव्य आपनकर एवं निजे सुरक्षित माने से तीनटी जिनस करिवे मास्क पिंदिबे 85% ऑफ द टाइम मास्क पिंदिबे घन घन हाथ को धोइबे एवं सामाजिक दूरत्व बजाय रखिबे मु आगु कहथिले आपन कहिबा सहज करिबा कठिन काली हमर लॉकडाउन समय रे दिन बेले गोटे बाजी थिला जने भद्र व्यक्ति आसी पहुंचे जेतु काली लॉकडाउन थिला मु सरकारी बासभवन रो काम करथली ऑफिस जाई नथली एवं मते खबर आसिला जे जने भद्र व्यक्ति आछंती जने सीनियर भद्र व्यक्ति वरिष्ठ अधिकारी जने सी तांको सांगो गोटी गाड़ी रे आछंती न कहि कि आछंती एवं तांकर दुईटी सान सान पिला को नै आछंती मते भेटेबा पे तांकर कहया कथा जे मोर सान पुओ आपन गोटे बड़ फैन ताकू मु आनी देखा मुझे पिला दीटी को देखिकी आग कहली जे पुओ माने टिके सामाजिक दूरत्व रखिकी कथा भद्रता भद्रता जो भद्रता कारण भेटिया को पड़ा सी भद्र लोक से सान पिलाटी को मु किछि बारण करने आगु कहले मुंडिया मार एवं से सान पिलाटी मो हाथ छुई मो गोड़ छुई प्रणाम कला देखो ये शिक्षित लोक सांग सांगे गाड़ी आसन भला मन रे आसन मास्क पिंधिक आसन किंतु से पुओ दिटा को रिस्क को पठाउचंती एवं मोर भी तो कोविड थाई पारे मते तो फिजिकली टच करिया कथा तेणु ये जो मु आपन को कहली जे निजे सुरक्षित रहंतु एटा कहिबा सहज करिबा कठिन एवं मु लारी ब्रिलियंट कथा आपन मान को एथै कहूची जे एटा को लाइटली नले हबना वेबिनार करी छाडी देले हबना निजे कोनोसी मते अन्य मान को सैटिस्फाई कला भलिया निज को सैटिस्फाई कला परी दी चारटा काम कर दे कि छाडी देले हबना आज नुह सप्ताह को नुह मास को नुह अंतत पक्ष 2 वर्ष पर्यंत निजर स्वास्थ्य विषय रे आपण मान को सचेतन होबा को पड़ी निजे सुरक्षित रहिबे द्वितीय जिनसटी हला ए जो सुरक्षा गोटे बलय गोटे परिसर ता भितर आपण अछंती ए जो सुरक्षार बलय ताकू निजे सुरक्षित रहिबा परे संप्रसारित करिवे बढ़ेइबे तक से बढ़ेइबार माने कोन से बलय भीतर को अन्य मान को आनिबे जो माने आपण पाखरे अछंती मु मास्क पिंदुछ तीन थोड़ा चेंज करके पिंदुछ मो घर को काम करिया पे झियोटी आसुछ बा पोटी आसुछ ताको कहि दै चंती आपण मास्क भी गोटे दै चंती किंतु से मास्क काची के पिंदुछ से विषय आमे जानि कि मध्य सेटा को अजणा करके रखुछ से पिलाटीर ता निज घरे कौन सुविधा अच्छी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी कौन अच्छी तार वास्तवताटी कौन से विषय आमे जहाँ देखुने जहाँ जानूने से विषय लेके आमे चिंतित होने किंतु निजे सुरक्षित रहा परे आपण निज पाई निज छुआंको पाई जहाँ जहाँ स्टेप नौचंती जहाँ जहाँ पदक्षेप नौचंती से गुडी को संप्रसारित करंतु निज बलय पाखरे निज परिधि पाखरे जो मनीष ठियाइछि ताकू ता भितर को आनु तेणु प्रथम कथा आपण मान को कहबी निजे सुरक्षित रहंतु एवं सुरक्षार बल को सुरक्षार बलय को संप्रसारित करंतु या पर आउ गोटे जिनस मु आपण मान को कहबी आपण माने समस्त उच्च मध्यवित्त परिवार रो सदस्य आपण माने आपण मानकर साधन अछि आपण माने जहा चाहिबे निश्चय ताकू आपण हाथ को नहीं परिबे किंतु ए जो समय एटा हला निजर खाइबा पिंधिबा एवं बुलिबा को संकुचित करिवार समय संप्रसारित करिवार समय आमे जति भी आम पाखरे पैसा अछि धन अछि जन अछि संबल अछि एवं आमे जहाँ चाहिबा खाई परिबा जहाँ चाहिबा पिंधि परिबा जोठी की चाहिबा जाई परिबा
सब क्षमता अच्छी किंतु जिते महामारी को लेकिन आम लड़ुचे आ महामारी 6 मास नुह वर्षे नुह बहु वर्ष चली पारे आमको आमर नीड को संकुचित करने को पड़े मुझे 4 ओली खाऊली 2 ओली खाइबी मुझे 4 रकम लुगापटा पिंधुली 2 रकम लुगापटा पिंधि मुझे 4 थर मो घर बाहर को जीवार दरकार होता मु थरटीए जीवी आम घर जदि 6 जन बाजार जाऊे सप्ताह को 6 थर ताले जड़े सप्ताह को थरे जाकि बाजार घाट करके आने ये जो जिनसटा एटा अनुशीलन जिनस जोटा आपण माने रेंज रोवर हिसाब रे जोटा आपण माने अंगांग निभोछंती nobody knows discipline better than you people do तेणु आमे अनुशासन रही अनुशीलन रही किपरि भाबरे हमरो नीड्स हमरो वांट्स हमरो डिजायर ताकू कमे कमे रखिबा तृतीय जिनस आपण मान को कहबी जे निज एवं निज लोकंकर मानसिक स्वास्थ्य प्रति सचेतन रहंतु एवं जत्न नियंतु बाहर यही संक्रमण होची मोर हुए तो संक्रमण होई नाही किंतु मन भितरे छानिया अछि डर अछि दिन पर दिन एटा को नेकी आपण लढुचंती आपण बाहर हुए तो बेस परिष्कार परिच्छन्न सुंदर सुस्थ देखा जाउचंती किंतु आपण मनर जो प्रेशर रहउची चाप रहउची सेटा आपण भी हुए तो निजे बुझी पारु नांती किंतु हमकु जानिबा को पड़िबो हमकु मानिबा को पड़िबो हमकु धरि नबा को पड़िबो हम समस्तंकर मानसिक संतुलन खबर कागज टेलीविजन देखुचंती अन्य सूत्र खबर जानुचंती व्हाट्सएप रे सठिक खबर भूल खबर सब रकम जिनस देखि हमर मानसिक संतुलन दिन पर दिन सप्ताह पर सप्ताह मास पर मास सेथिरे तार गोटे चाप पड़ुछि तेनु निजर मानसिक स्वास्थ्य को नजर रे रखिया को पड़े आपण केतेटा प्रभावित हेबे केतेटा ए कोविड निकरी सब बेले आपण मन भीतर रखिबे कोन कोन कले आपनकर मन भल रहिबो एटा को बहुत गुरुत्वपूर्ण भाव रे हमको ग्रहण करिया केवल निजे नुह मु ए जो मानसिक स्वास्थ्य कथा एटा आउ गोटे परिप्रेक्षी रे आपण मान को कहया को चाहिबी सेटा हला घरे वयस्क लोक जो घरे जेजे अछंती अजाई अछंती बापा माँ अछंती 70 वर्ष 80 वर्ष रो बयस हो गलानी से माने कहू ना किंतु तांकर मानसिक स्वास्थ्य रे निश्चय चाप पड़िबो एवं ए जो जिनसटी सेटी अन्य उपाय रे मध्य तांको स्वास्थ्य रे अन्य समस्या निश्चय सेतु हेई परिबो तेणु सेमानंकर वयस्क लोक मानंकर एवं शिशु मानंकर छुआटे घरे अछि लॉकडाउन अछि शटडाउन अछि आमे से केतबेले पाठ पढुछि केतबेले दुष्टामी कोछि केतबेले आपन को फोन नै करी खेलुछि किंतु ता मन भितरे कोन होछि सेटा आपन भी सठिक भाव रे पचारु नांती से भी कहि पारुनी किंतु तार गोटे मेंटल प्रेशर बिल्ड करूछि तेणु विशेष भाव रे वयस्क एवं शिशु एवं जदि कौनसी संवेदनशील परिस्थिति रे कई घर व्यक्ति थांती तांको प्रति हमको सेंसिटिव होगा पड़े या पर मु आपन को गोटे आमे मनस्तत्व कथा कहूचे मानसिक स्वास्थ्य कथा कहूचे तेणु गोटे विषय आपन मान को कहबी जे लगातार अनेक दिन पर्यंत जदि गोटे बड़ समस्या आम सामना को आसी जाए सेतेबेले आउ से समस्या सामने रे आमे निजको असहाय मने करू सेतेबेले हमर चारिटा इमोशनल रेस्पॉन्स वे से विषय मु आपको टिके जणै दो को चाहिए गोटे प्रथम रेस्पॉन्स वे भय आमे डरी जाऊ डरिबा परे धरंतु गोटे महाबात्या आसिला से 4 सप्ताह 5 सप्ताह 8 सप्ताह परे तार प्रकोप कमी गला किंतु एठी तो मास पर मास चली छी तेणु भयरू कौन प्रॉब्लम सॉल्व हो पारुनी जेतेबेले भयरू हमर प्रॉब्लम सॉल्व न हुए सेतेबेले आउ गोटे इमोशन आउ गोटे भावावेग सांगे सांगे आसिक पहुंची जाए सेटा हला राग हुए निज लोकन ऊपर राग हुए ओडिशा ऊपर राग हुए से साही बस्ती जो लोक अछि
ता उपरे राग हुए, जे फेरंता श्रमिक आसला सूरत रु गंजाम ता उपरे राग हुए, डाक्तर नर्स मान को ऊपर राग हुए, समाज ऊपर राग हुए एवं सरकार को ऊपर राग हुए। तेणु प्रथम भाव में डर लगिला, द्वितीय जिनस राग लगे, तृतीय जिनस आप देखिए जे डरिले रागिली किंतु से किसी सुफल है, तेणु गोटे निराशवाद आसी जाए। सो फर्स्ट यू हैव फियर, देन यू हैव एंगर एंड देन यू हैव फ्रस्ट्रेशन। जेतेबेले आपनकर राग हला, जेतेबेले आपनकर डर हला, आपनकर निराशावाद हला, फ्रस्ट्रेशन हला, सेठु आपन कोन करिवे, आपनको पाकु जे व्हाट्सएप रे खराब खबर देखियो ताकू आपन फॉरवर्ड करियो आरंभ करियो। तेणु दिस होल साइकोलॉजी किक्स इन of fear, anger, frustration and forwarding of messages. We need to be aware of this so that we recognize it before it begins to hurt us. वर्तमान शेषरे मु आपनकु अल्प केतोटी कथा कहिबी। आपण माने मु आगुरु मध्ये आपण मानकु कहली जे आपण माने आजिर अंधार रातिर जणे जणे ध्रुव तारा, आपण माने जीवन जड़े जड़े लाइट हाउस, आपण माने बुझिले समाज बुझिबो, आपण माने सचेतन हेले समाज सचेतन हबो। प्रथम जिनस आपण माने हृदयंगम करंतु एवं आपण माने अन्य मानकु सचेतन करंतु, सेठी हला जीवन रो प्रतिटी क्षेत्र को आसंता 2 वर्ष पर्यंत, कम से कम 2 वर्ष पर्यंत कोविड-19 प्रभावित करिवो। ता माने कोन, ता माने हला किए क्योंठी कौन चाकरी करुची ता ऊपर प्रभाव पड़िबो, अर्थनीति ऊपर प्रभाव पड़िबो, मानसिक स्वास्थ्य ऊपर प्रभाव पड़िबो, शिशु मनस्तत्व ऊपर प्रभाव पड़िबो, स्कूल कॉलेज रे किपरि भाबरे के पाठ पढुची ता ऊपर प्रभाव पड़िबो, आपण कोन खाइबे, कोन रोसई करिवे, डाक्टर खाना केते थरा जिवे, आपण माने का संगे सांग होबे, आपण माने को किपरि भाबरे निजर एंटरटेनमेंट करिवे, सबु जिनिस जीवन रो एपरी कोनोसी क्षेत्र नाही जहा ऊपर प्रभाव पड़िबो नाही। एटाकू भाबी नेले थरे तापरे आपण मन को बांधी परिबे। वर्तमान हला जे आपण स्वेच्छासेवी संस्था, स्वेच्छासेवी हिसाब रे एवं स्वेच्छासेवी संस्था हिसाब रे आपण मानकु प्रथमे निजर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रति जत्नवान होबाकू पड़िबो एवं मु आगुरु आपण मानकु कहिछि निजे सुरक्षित रहि अन्य मानकु निजर सुरक्षा बलयकू आपण मानकु आनिबा। तृतीय जिनस हला जे बहुत लोक विशेष करी आमे ओडिया जाति हमर संवेदनशीलता बहुत अधिक, आमे अन्यर कष्ट अन्यर दुख पाई संवेदनशील हो, आमे समस्त को साहाय्यर हाथ बढ़ो, किंतु आमको मन रखा पड़ो जे एटा साधारण परिस्थितिर वॉलंटरी एक्टिविटी नो। आमे जहाँ भी करिबा निजको सुरक्षित करिबा, कारण ए जिनसटा हाथरू एपट सेपट हे गले वे तो मु भलो इंटेंशन नै कि भलो मन नै कि आउ जन को साहाय्य करे को जीबी, किंतु वे तो रोग नै कि आसबी बा होय तो ताकू रोग बांटी दे पारे। तो यही परिस्थिति रे हमको जानिबा को पड़िबो दैट वॉलंटियरिंग इन एन एपिडेमिक और ए पैंडेमिक रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटी, रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। और सही समय रे हमर सबुठु बड़ कर्तव्य हला जे वी शुड हेल्प दोज हु आर ट्रेन्ड टू हेल्प अदर्स। जो माने एही परिस्थिति रे अन्य मान को साहाय्य करिवा पई तांकर विशेष भाव रे तांको तालीम दिया जायछि, सेमान को आमे किपरि भाव रे साहाय्य करि परिबा, सेमान को आमे किपरि भाव रे स्वीकृति देई परिबा, जा फल रे दे विल डू देयर जॉब बेटर। मते बहुत भलो लागिला आपण माने जो हेल्थ वर्कर मान को पई तांको सम्मान देले एही आजिर कार्यक्रम रे, सेही मान को आमे किपरि भाव रे अधिक सशक्त करि परिबा। जो माने मु आपण मान को अल्प समय परे कहिबी को धरणर लोक काम करछंती हम कोविड-19 युद्ध रे को माने कोविड योद्धा हिसाब रे तांको सशक्त करि। आशा आंगनबाड़ी एवं एएनएम नर्स आपण माने जानी थिबे, आशा दीदी
जो माने हमरो लास्ट माइल जो माने समाजर सबुठु तळ वर्गर लोक मानकर स्वास्थ्य पाई साहाय्य करते सचेतनता सृष्टि करते से मानकु आमे आशा दीदी बोली कहू जो मानकु ऑनोरारियम जगरे से ऑनोरारियम थ्रू रे तांकु सरकार एंगेज करिचन एमानकर काम नुह कोविड-19 पाई से माने आसी नथिले आशा दीदी हवा पाई किंतु निस्वार्थपर भाबरे सारा ओडिसा रे गाँ रे 47,000 आशा दीदी काम कर 60,000 आंगनवाड़ी वर्कर काम कर एएनएम नर्स माने ऑक्सिलरी मिडवाइफ एंड नर्स जो माने साधारणतः प्रसूति मानकर जो मानकर पिला छुआ हवा थाए से मानकर स्वास्थ्य प्रति से माने जत्नवान होंती तांको सब सुविधा किपरि भाबरे मिली परिवो से विषय देखि से माने काम करंती 9,000 एएनएम वर्कर 60,000 आंगनवाड़ी वर्कर जो माने क्रेश चलाते सेटा हला तांकर काम छोटो छुआ को रखिकरी 4 घंटा 6 घंटा तांको कथा बुझंती 1,16,000 आशा दीदी आंगनवाड़ी दीदी एवं एएनएम दीदी माने ए कोविड युद्ध रे वर्तमान ओलेछन दिन को नो सप्ताह को नो देखु देखु 4 मास 5 मास हे गला आमे तांकु किपरि भाबरे सशक्त करि परिबा आ गोटे बड़ जिंस हला जे आपण माने अंतर्जातिक संस्था आपण माने संवेदनशील आपण माने सबुबेले समाज रो भलो करी आछंती आपण माने जदि सांगठनिक भाबरे जिनस पत्र कलेक्ट करि परिबे टंका कलेक्ट करि परिबे ताकू जदि आपण चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड को दे परिबे मु आपण मान को संपूर्ण भाबरे गारंटी दे कि कहि परिबी जे ओडिसा सरकार प्रतिटी पैसा को कोविड-19 रे संपूर्ण भाबरे नियोजित करूछन बहुत अर्थर आवश्यकता रही आपण माने जानुछंती टेस्टिंग चली जोटा हमें बुझी पारुनु सेटा हला प्रतिदिन टेस्टिंग मास तलकर फिगर मु आपन को देबी दिन को 2 कोटी टंका लागुतला टेस्टिंग करिया तेणु जदि वर्षक जाक टेस्टिंग चलिबो आमे 1000 कोटी टंकार कथा कहूछ 1000 कोटी टंका लागिबो केवल टेस्टिंग पे एटा असाधारण समय तेणु यही समय आप जदि देखंतु 10 लाख लोक आसिक क्वारंटाइन सेंटर रे तांको रखाला हाँ 10% एपट सपोर्ट सुविधा असुविधा मानि नौछि किंतु 80% 90% लोक क्वारंटाइन सेंटर रे रहिकरी तांकर निज निज घर को फेरी गले 10 लाख लोकन को क्वारंटाइन सेंटर रे 14 रु 28 दिन रखिबा आपण भाबी परुथवे तार खर्च केते सेटा सरकार संपूर्ण भाबे वहन करिछ अनेक रकम रो कष्ट हेछि असुविधा हेछि किंतु ओडिसा रे अनाहार रे के मरि नांती 5 मास हे गेलानी जो सरकार सकाळ संध्या गत 5 मास 6 मास धरि के अनवरत भाव रे काम करि चलिछि सेही सरकार को आमे किपरि भाव रे सशक्त करिबा आपण माने आपण को अनुष्ठान जरिया रे आपणकर सदस्य मानकु अन्य मानकु से विषय रे निश्चय अवगत करिवे बोली मु आशा करूची एवं मुक्त हस्तरे मो माननीय मुख्यमंत्री रिलीफ पार्टी को आपण माने आपणकर हाथ बढ़ातु एटा मु निश्चय अनुरोध करिवे आपण माने आ गोटे जिंस सेटा हला रेंज रोवर स्काउट गाइड एमान को कथा जते बेले मो मन को आसे मते 4टा सी मो मन को आसे कौन 4टा सी आपण माने होचंती कॉन्फिडेंस रो प्रतीक आत्मविश्वास रो प्रतीक आपण माने स्काउट गाइड गोटे छोटो पिला स्काउट के हुए गाइड के हुए आगामी दिन रे रेंज रोवर के हुए सीए तार कॉन्फिडेंस बढ़े तार हौसला बढ़े तार आत्मविश्वास बढ़े तार दंभ बढ़े तेणु जने स्काउट गाइड हिसाब रे मोर प्रथम मोर जो चरित्र तैयारी हुए सेटा हला कॉन्फिडेंस द्वितीय सीटी हला कॉम्पिटेंस अनेक रकम संस्था अछि किंतु स्काउट गाइड रो मूल लक्ष्य हला किपरि भाबरे विभिन्न क्षेत्र रे आपण माने गोटे पिला को कॉम्पिटेंस सिखे से दौड़ी रे फास करिवा हो बा गछ काटिबा हो बा कैंप फायर करिवा हो
प्रतिटी गोटी गोटी स्किल से स्किल रे आपण माने कॉम्पिटेंट करंती तो कॉन्फिडेंस बढ़ाती कॉम्पिटेंस बढ़ाती तृतीय जिनस हला कैरेक्टर तयारी करछंती आपण चरित्र तयारी करछन so building confidence competence character and last but not the least आपण माने compassion तयारी करछन गोटे मनुष्य को किपरि कंपैशनेट हवा को हबो सेया ही आपण माने सिखौछंती तेणु विश्वास दौरान दक्षता दौरान चरित्र दौरान एवं संवेदनशीलता दौरान ये जो चारिटी सी है कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस कैरेक्टर और कंपैशन ये चारिटा सी रे हमको आउ गोटे सी को अख्तियार को आनियो को पड़ियो और सही सीटा हला कोविड-19 परि गोटे सत्य को जदि मुकाबला करी को पड़ियो आपण मान को पाखरे आपण को सदस्य एवं अनुष्ठान पाखरे तार साधन रही एवं ताकू आमे संपूर्ण भाव में आज लगेबा चारोटी जिनस सचेतनता बढ़ेबा आज वेबिनार आपण माने करूछंती एमती 800 900 लोक ए वेबिनार रे आसिकी आज जोड़ी हिचंती गोटे विराट बड़ जिनस एटा को संप्रसारित करंतु बढ़ांतु सचेतनता तयारी करंतु द्वितीय जिनस सुरक्षित रहंतु सुरक्षा को बहुत गुरुत्वपूर्ण भाव में देखंतु तृतीय जिनस साधन संग्रह करंतु सरकार को हाथ बढ़ांतु एवं सहायक संस्था जो माने अछंती तांको सहाय्य करंतु as I told you before dealing with an pandemic or an epidemic requires specialization इथे GNIC डे पड़ी की काम करि परिबो नै so our job should be to help those who are competent and qualified to help others शेषରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲରୁ ଶିଖିଥିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ at the end ସବୁ କିଛି ଯୋଉଠି ସରିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବ ସବୁ କିଛି ଯୋଉଠି ଅଟକି ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବ ସେଠି ଶେଷକୁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ରହିବ ତାକୁ କେହି ନେଇ ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କଣ ସେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଫେଥ୍ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ହୋପ୍ और तृतीयटी हला लव सो कहा जायछि जे at the end three things will last faith hope and love will last forever आज मु एतिकरे मोर वक्तव्य शेष करछि आपण मान को पुनी थरे मोर कृतज्ञता जनाउछि जे माने निज परिवार को मते आनिले आपण मान के संगे कथावार्ता करी बहुत भलो लागिला बंधु परि लागिला मो जीवन रे नूतन अभिज्ञता मु आगुरु केबे स्काउट गाइड संस्था संगे जो केबे मु जानि छी आपण माने कोन करन आपण मान को दूर देखिछि आपण मान को एडमायर करिछि किंतु एते जण स्काउट गाइड रेंजर या आपण मान को परिवार सदस्य को केबे भेटिबार मो सुजोग पाइ नथिले मु पुनी थरे डॉक्टर नमिता पटनायक को कृतज्ञता जनाउछि एवं राज्य सरकार को तरफ आपण मान को धन्यवाद जनाउछि सुस्थ रहिबे निरापद रहिबे धन्यवाद नमस्कार Thank you, sir. I'm really grateful. I'm really grateful. बहुत सुंदर लगिला केवल कथा नुह एक कामर कथा कामर एक्सपीरियंस कथा जति अनुभूति आपण शेयर कले सर आमे निश्चित भाव में करिवु आपण जो देइथिबा दुटी टैक्स किपरि भाव में डोनेशन कलेक्ट हेबो एवं कोविड-19 पर सत्य हबो सेति पय आमे तत्पर हेबु एवं आमे सचेतन रहइबु सुरक्षित करिबु संप्रचार करिबु एवं सहायक संस्था मान को हाथ जोड़िबु एवं बाइबल में सेहि तीनोटी कथा निश्चय मन रखिबु we have faith we have hope and we love to each other and this is the best way you have to teach the confidence the competency and the character and the compassion really sir we are very much obliged now I request Mr. Mishra the senior lecturer in physics of my college to coordinate the question and answer session and I request all my friends from different organizations, please be quiet and listen to others. Then you reply when your turn will come. Now, please unmute. And I now request our Dr. Mishra, please.
Am I audible, madam? So, sir. Am I audible? Okay. So, Rajput, are you getting me? yes, I am getting you. Please carry on. Am I audible to you? No, sir, your voice is not at all audible. My voice is not audible. Now is it audible? Hello. Yes. Is Yes. it now? Madam, is it audible now? Audible. Yes. Audible. Can you Okay. hear? Yeah. Okay. It's not there. Yes. Okay then. Yeah. Okay, of course. Madam, is it audible? Janavu? Hello? Audible, sir. You can ask. Start. Okay. Yeah. Okay. Okay then. So as expected, our chat box is flooded with questions because we have with us our very popular Honorable Chief Speaker Bagchi sir, who has become the household name since the outbreak of this COVID-19 in our state because of his unique way of presentation of facts and figure about the COVID-19. And we are really obliged to sir as he has agreed to have an interactive session with the participants. Now I will read out the name of the participant and please unmute yourself and place your question before Bagchi sir. To start with, Mrs. MP Pakam, Lady Vice President, Bharat Scouts and Guide from Arunachal Pradesh. Madam, please, you ask your question. Madam MP Pakam, are you here in the network? Madam MP Pakam from Arunachal Pradesh. ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଟା ତାଙ୍କର ସିଏ ନେଇକରି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିବିନି, ତେଣୁ ମତେ ଆପଣ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। Okay, sir. Then Mr. Krishna Swamy, Executive Director, Bharat Scouts and Guide, National Headquarters, New Delhi. Sir, can you place your question? Mr. Krishna Swamy, are you here? Okay. Next. Okay, then Professor Manoj Dora, trainer and skill development from USA. Are you here, sir? Sir, are you here? Okay, then Miss Sunita from Finland, social activist. Yeah. Are you here, madam? Miss Sunita? Yes. Yeah. Yes, sir. I'm here. Yes. Please, you may place your question before our honorable speaker. Yes, sir. It's nice to meet you all. And I am a Odia NRI, and I work for work on sustainable development goal. And using this sustainable development goal, actually I was looking how to help Odisha. So my idea is to support at Gram Panchayat level, forming a COVID facilitation center. As Bagchi sir said, exactly the COVID effect will be for 2 years. No? Then how can we empower our society, our people at the village level? That is the big question. And towards this, I am going to dedicate my time to set up a COVID care center and helping the Odisha government. So I have a question to Bagchi sir. How does a new NGO can participate in this? No, at my NGO, I am presence doesn't exist in Odisha, but I have been collaborating with 2 other NGO, and they are quite new, like something 1 year or 2 years old. So how government will help to this NGO in this setting up things? No? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି যেটা ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ସମୟ। এটা ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା, କାହିଁକି ନିଜର ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି। So you need to be very highly trained to be able to work in the field. ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 6798ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି।
आमे जदि ओडिसा रे आज एतिक बाट आसी परिचे आमर जदि परिसंख्यन बा आमर संक्रमण जोठी जेतिकिटा व्यापीछि सेतिकिरे रही परिछि सेथिरे ए 6798 पंचायत जो माने क्वारंटाइन सेंटर चलौचंती तांकर विराट बड़ अवदान रहिछि आमे आउ गोटी एनजीओ हिकी एथिरे न होले कि आपण निज गाँ को चूज करंतु आमे तो समस्त गाँ रु आसीचे आपण को गाँ रे भी गोटे पंचायत थिबो आपण चीफ मिनिस्टर स्लिप फंड को जहाँ साध्य दियंतु एवं कहंतु जे एटा मो गाँ रो पंचायत पर्यंत पहुंचे दियो तेणु आज पुणी थरे मो गोटे नुआ करके आपण फिनलैंड रे अछंती एत दूरवाट रे अछंती सब जिंस देखंतु समय सापेक्ष कष्ट सापेक्ष आज लॉकडाउन अछि काली बढ़ी जीवो लॉकडाउन छिंडिबो मासटे हमें साधारण भाव रहिबा होय तो पुणी लॉकडाउन आरंभ होई जीवो आपण जो प्रैक्टिकल इंप्लिकेशन गुडा ता कथा भाबंतु एवं जो माने एक्जिस्टिंग एनजीओ अछंती ऑन द ग्राउंड देयर आर सेवरल ऑफ देम तांको संगे जुड़ी जातु सो आई मेड अ स्टेटमेंट अर्लियर दैट we should be helping those who are helping others. Right, sir. Instead of everybody jumping in, हम जानू छी जे हम भितर गोटे मु आगुर भी आपण मान को कहली हमें ओडिया जाति हम हृदय रे करुणा रहिछि हम हृदय रे भलो पाइबा रहिछि हमें समस्त को कष्ट रे साहाय्य करिया पे हाथ बढो किंतु एटा बात्या बन्या नुह एटा गोटे साधारण परिस्थिति नो यू आर डीलिंग विथ अ पैंडेमिक it requires specialized capability is either support the government or support the UNICEF on the ground काम करूची Red Cross on the ground काम करूची Scouts and Guides on the ground काम करूची आपण माने लक्ष्य मास्क बांटी छंती आगु 10 लाख मास्क दरकार आपण माने लक्ष्य सैनिटाइजर बांटी छंती आकु 10 लाख सैनिटाइजर हमें निजे अलगा अलगा नहै कि असंतु आनुष्ठानिक भाव रे मिले मिसे एटा हला मोर आपन को धन्यवाद फिनलैंड छंती फिनलैंड इज रिलेटिवली सिक्योर भारत Their process is also very good, sir. In Finland, process is also very good for the entrepreneur also and for the job seeker also. You know, so that some kind of process that I want to bring it to Odisha. You know, don't look at whole India. Just Odisha. If you look at one part, the population will be similar to 50 lakhs. No, so if we can manage 50 lakhs similar to Finland, then we are done. You know, so that's the reason I'm taking. With due respect, I must tell you that you can't bring Finland here or you can't take Odisha to Finland. Yeah. Which like सब जिनसर गोटिए सराउंडिंग रियलिटी रहउची तेनु पुनी थर मु आपन को अनुरोध करिवि जे एई जो समय रे बेस्ट हबो आपण निजर अनुष्ठान को ढाली दियंतु जा दे परिबे एवं से माने डायरेक्टली जहा करिवे करि परिबे बाजे जोठी न पारिबे से माने अन्य जो माने ऑन द ग्राउंड अनुष्ठान अछि तांको तांको जरिया रे आपनकर भलो पाइबा आपनकर साधन आपनकर संबल को निश्चय पहुंची देबे Yes, sir. Same thing I am following. Thank you very much, sir. नमस्कार. Okay, thank you, madam. Thank you, sir. Then Dr. Sanat Patnaik, Secretary, St. John's Ambulance, please. Your question, please. नमस्कार. मोर क्वेश्चन बागची सर को सर हमें प्लाज्मा थेरापी प्लाज्मा कैंप करि परिबे कि हमें करि परिबे कि प्लाज्मा आउ द्वितीय कथा हला हेल्दी लोकंकर प्लाज्मा टा यूटिलाइज हेई परिबो कि कोरोना पेशेंट को पई देखो मु डॉक्टर नो हला मु सरकारी मुखपात्र हे माने किंतु मु चिकित्सा विशेषज्ञ नो तेनु मु प्लाज्मा ऊपर आपन को कोनोसी उपदेश दबाटा ठीक होबो नै मु आपन को एटा जानले चाहिबी जे आगुर मध्ये आपण मान को कहिची जे एवरी डे वी आर लर्निंग अ न्यू थिंग अबाउट कोविड एंड नॉट नेसेसरीली इट इज द फाइनल थिंग वर्तमान चर्चा रे रहिची प्लाज्मा एवं इट इज स्टिल एक्सपेरिमेंटल इट इज नॉट
certain that it is the solution, but किछिटा कोठी निश्चय କରିବାକୁ ପଡିବ जोंथि वर्तमान भारत सरकार ताको अलाउ करिसंती एवं ओडिशा सरकार हमरो किछि दिन तळे माननीय मुख्यमंत्री प्रथम प्लाज्मा सेंटर उद्घाटन कले प्लाज्मा कलेक्शन होची तार ब्रॉड रिक्वायरमेंट हला जति जने कोविड रे आक्रांत होइकरी भलो होई जायथिबे तो तांकर ब्लड ग्रुप प्लाज्मा को कलेक्ट करके जो माने सीरियस पेशेंट तांको ऊपर ताको यूज करा होची आपनकर द्वितीय प्रश्नटी थिला बा सेही प्रश्न भितरे जो इम्प्लिकेशन था जे आपन एथरे ओले परिबे किना देखंतु इटा जो स्टेज रे वर्तमान अछि इट इज बेस्ट हैंडल्ड बाय द एडवांस्ड accredited medical centers एवं राज्य सरकार तो केवल कथा नु एटा राज्य सरकार केंद्र सरकार एकाठी ही काम करबो पड़ो एला सबथि ऊपर रहिछि आईसीएमआर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च सेमाने हमकर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहिछि से अनुसार काम होछि आपन को जानिबारे जदि केही सुस्थ होय कि फेरिचंती कोविड रो जानको अन्य कोनसी कॉम्प्लिकेशन नै से निश्चय डोनेट करि परिबे and that donation should be handled through the existing normal health department channel. नै सर मो क्वेश्चन टिके अलगा थला मु कहली जो माने कोरोना पेशेंट तो रिकवरी जन सेटा तो हमें गोटे पार्ट रे हे परिबो हेल्दी मैन जे सफर हेई नाहंती कोरोना रे किंतु हेल्दी अछंती से मानकर से परिबे सुनो से जिनसोटा बुझंतु साइंटिफिकली बुझंतु आपण जते बेले कोरोना को हरेई देले सेते बेले आपण को एंटीबॉडी तयारी हियो तामाने आपन को देह रे गोटे एंटीबॉडी अछि जोटा फाइट करि करूची अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक वायरस कॉल्ड कोरोना so somebody who has got a competent capability in the body system only that competent capability can be transferred जो सुस्थ लोक रक्त देले आउना भलो होइजो this doesn't work like that thank you sir thank you next dr suresh kumar naik from jharkhand प्रश्न पचरंतु तापरे देखंतु रविवार आपण मानकर मध्य अन्य काम थिबो okay sir but we have madhusudan kalpana sir only two questions kalpana madam and madhusudan das only two questions okay then please kalpana madam please you may ask kalpana madam Major Kalpana Das, treasurer. Am I audible? Yes. Am I audible? Yes. Good afternoon to one and all present here. Esteemed Chief Guest Bagchi sir, Kali sir, and other members present here. Really thanks. There is a saying in Bengali, সবাই বলে ভালো থেকো, সবাই বলে সাবধান থেকো। কিন্তু কেউ বলে না আমি তোমার ভালো থাকা, সাবধান থাকার দায়িত্ব নিচ্ছি। Thank you Odisha government, Bagchi sir, and here Bharat Scouts and Guides and everybody present here for কত ভালো লাগলো আপনার কথা শুনে ঠিক আমার মায়ের কথা মনে পড়ছে মা কিন্তু আমি কথা বলতো বোঝাতো খুব ভালো লাগলো Thank you sir কেউ বলে না হ্যাঁ আমি দায়িত্ব নিচ্ছি আপনারা সবাই দায়িত্ব নিয়েছেন and especially I am a big fan sir আপনাদের যেতেবেলে হুয়ে মু দৌড়িকে কেবে বি মিস করেনি more question that related to that only during any disaster one issue is very important that is lack of information to common man information पाई पारंतनी किंतु आपण माने ओडिशा गवर्नमेंट जो आगे से गोटे एते सुंदर सिस्टम गोटे हैला एवं डेली जो स्पेसिफिक नॉलेज है एंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस एवं द डेवलपमेंट्स एवं ता संगे छोटे छोटे गप्प कही जो अवेयरनेस टिप्स that is hats off to that is माने what माने wonderful miracle and that's why we are in comparison to other states comfortable also definitely you are comfortable position also only because of that sir a system ta other disaster bale bi chalu ro that is my request अन्य disaster bale टिके सर एटा असुविधा हो जाई जो सेटअप करछथि आमी जदि या फिर भाबिबा एटा कंटिन्यू करू सर तो कॉमन मैन जदि इंफॉर्मेशन पाई पाले then it is very helpful and second thing sir what submission अछि देखो तो सर many NGO many personality निजर पर्सनल लेवल ले they are working in this field से माने काम करछथि
सर मु तो एनसीसी रे भी थी रेड क्रॉस रे मोर लॉन्ग एक्सपीरियंस अछि मु सेथ मो अनुभूति रुके कहूची देयर इज अ lack of coordination sometimes coordination टिके अभाव होची coordination in the sense सर रिपीटेशन होची और डुप्लीकेशन होची फॉर एग्जांपल सर कोविड बेले मु गोटे कहूची अनेक बड़ा जगह बांटला बेले मु देखिली सर गोटे जगह होइतो 4 थर पहुंची जाईची मास्क हो खाइबा हो किंतु गोटे गोटे जगह पहुंची पारे सर एटा गोटे बहुत बड़ जिंस जोटा कि इक्वल हे पारिबो मोर सर आम्बल सबमिशन थिला सर हमर महाबत्ता बेले गोटे इंटरनेशनल आईएसजी काम करूची आईएसजी काम करूची व्हाई नॉट काली मिश्रा सर अछंती एबो लीडरशिप ताकर ताको अंदर हो गोटे कोऑर्डिनेशन करंता लोकली जोठी रे कि गोटे सिस्टम डेवलप करंता जोठी रे हमर मॉनिटरिंग सिस्टम रहता विद द हमर गवर्नमेंट सहित हाथ मिले ताको सहित केमिति सर गोटे सिस्टम सर आपण पारिबे आपण सब करि परिबे तर भाबिले होता गोटे मॉनिटरिंग सिस्टम कोऑर्डिनेशन सिस्टम जेमिति हमें लोकली काहे कि न करबा स्टेट लेवल हो बा लोकल लेवल हो ऑल एनजीओस मन को सर एटा थिला मोर सबमिशन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग अस सेफ सर सब दिन सुनी सुनी के अंत लोक माने एते एवर हे गलेनी मु भाबचे आम मानकर जब आपण बहुत है माने सहज कर दैछंती नहीं देखो तो आगुकू मु कहली जे एटा किछ सप्ताह कथा न मास कथा न हमको वर्ष वर्ष धरि के लड़िया को पड़ियो तेणु आपण माने निश्चय बहुत बड़ आकार कंट्रीब्यूट करि परिबे आपण ओडिसा रे हमर किपरि भाव रे समस्त को नै कि समस्त को एक संगरे नै कि समस्त को सूचना दे कि समस्त को ए विषय ज्ञान दे कि एकाठी कले हमें एथि पई सबुठ बड़ मु श्रेय देबी हमर माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक को एथि पई जे देखो तांकर हार्ट इज अबाउट द कॉमन मैन एवं सीए हमको जो निर्देश दिला जे देखो आपण सरकारी भाषा रे कथा हेबे नाही मनीष पणिया को स्वीकार करे को पड़िबो जते बेले आमे कष्ट भीतर देखि जाऊ दुख भीतर देखि जाऊ आपण केते सुंदर बंगला रे कहले हृदय स्पर्शी हला कथाटा एथि पई हला जे आपण गोटे निज भाषा रे कहि निजर करी कहले तेणु आमे हुए तो सरकारी कळ हेई थाई पारु साधारण समय रे हुए तो सरकार ताकर निज भाषा रे कथा कहंती किंतु माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश थिला परिष्कार निर्देश थिला जे हमको साधारण मनुष्य संगे जोगाजोग करे पड़ियो साधारण मनुष्य जेते बेले दायित्व नबो सेते बेले ही एटा को आमे संभाली परिबा एटा कोनोसी सरकार संभाली परिबे ने जोथि पई मु आपण मान को कहली जे आमे होछु प्रथम राज्य एटा को तो विश्व रे मध्ये कोटी हे नाही जे ग्राम पंचायत को जिल्लापाल मान को दायित्व दिया गला ग्राम पंचायत मान को कहला जे तमे दायित्व नियो एटा कोठी हे नै मानव इतिहास रे हे नै आमे विकेंद्रीकरण कथा को डिसेंट्रलाइजेशन कथा कहू किंतु देखंतु गोटे जटिल परिस्थिति भितरे गोटे सरकारी कल को किपरि भाव रे विकेंद्रीकरण एरिया रे चारियाड को बिछे दिया एटा तांकर निर्देश थिला कि you have to give power to the people on the ground and you have to respect people मु जदी आपन को तो कम जानि छी सेटा मोर गोटे डिसएडवांटेज बर्तन आपनकर दायित्व होची जे मते आपन एम्पावर करंतु एम्पावरमेंट रो प्रथम स्टेप हला नॉलेज जने बहुत बड़ व्यक्ति कहितले जे अंडरस्टैंडिंग इज द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम आमे तो स्वाधीन हवा को चाहूचे स्वास्थ्यगत भाव रे अर्थनैतिक भाव रे निजस्व भाव रे आमे स्वाधीनता खोजुचे से स्वाधीनतार प्रथम रिक्वायरमेंट हला नॉलेज ज्ञान थिले आमे निजर दायित्व निजे नै परिबा आमे स्वाधीन होई परिबा सो अंडरस्टैंडिंग इज द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू सो थैंक यू वेरी मच आपण माने एथरो निर्विघ्न रे रहंतु भले रहंतु मु जानि छी अनेक लोकंकर अनेक प्रश्न थिला मु क्षमा मागुची किंतु निश्चय केबे ना केबे हमको सर मोर गोटे प्रश्न नियंतु सर सर नमस्कार जस्ट कल मोर गोटे प्रश्न मधुसूदन दास I really need to leave now. Thank you very much. Thank you sir, thank you sir, thank you sir very much. Namaskar sir, thank you sir. Now I request Dr. Aditya Prasad Samal, the Vice Principal, Maharishi College, to extend heartfelt gratitude to all the guests and audience. Dr. Samal, please. Thank you sir. Dr. Samal, please.
Dr. Sama, please unmute. Thank you, Dr. Yes. Namita Pattanaik, respected please. Principal, Dr. Bijay, President of today's webinar, esteemed Speaker, Mr. Subroto Bagchi, the most sought-after personality during this COVID pandemic days, who has become a household name across the state. Honorable Inaugurator, Dr. Prasad Mishra, National Vice President, Bharat Scouts and Guides, dear Dr. Namita Pattanaik, lecturer in economics, Assistant State Commissioner, Convener and the brain behind this webinar, all the participants from the length and breadth of the globe. It is my proud privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of Maharishi College of Natural Law and Rover-Ranger, its Rover-Ranger units in particular, extend a very hearty vote of thanks to all the participants who blessed us with your participation in this webinar. I must mention our deep sense of gratitude from the core of our heart to our honorable speaker, Mr. Bagchi, who could spare some of his valuable time in spite of his busy schedule, particularly during these COVID days, and delivered a talk on the most contemporary issue in a very lucid manner. He reminded us about our role and responsibility during these severe pandemic days and what should be the role of various NGOs to educate and extend possible help to common people in fighting with this dreaded disease. I would like to extend a special thanks to Dr. Mishra for inaugurating the webinar and inspiring us during these bad days and extend his helping hand in mitigating the sufferings of the COVID victims. I am also extremely thankful to our convener, Dr. Namita Pattanaik, who has left no stone unturned to make this webinar really a grand success and a meaningful one. I extend my sincere thanks to Mr. Jnaneranjan Panigrahi, who is the guiding force behind organization of this seminar by providing uninterrupted technical support. My special thanks goes to my principal, Dr. Barik, for inspiring us in organizing this type of webinar one after another. I am also thankful to all my colleagues, particularly to Dr. Rajkishore Mishra, a young and energetic teacher of physics, without whom this seminar may not have been possible. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, everybody. Just to say one word, that is thank you to God, thank you to Almighty, who has given us a nice time to be here in this webinar. Now, log out. Thank you, Bagchi sir. Namaskar. So with faith, hope, and love, let us goodbye. With faith, hope, and love. Okay. Yeah. That's all. Namaskar, namaskar. That's all. For this next program, thank you. Thank you. Thank you so much. Guiding force behind us. Now, I request our esteemed guest, the chief speaker of this webinar, Mr. Subroto Bagchi,